गोवा में शुरू हो रही है वो मीटिंग जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भारत, रूस और चीन जैसी बड़ी ग्लोबल शक्तियों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक हो रही है और कई बड़े समझौतों को फाइनल टच दिया जाएगा। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में 15 मुख्य समझौतों पर चर्चा होगी। अब से थोड़ी ही देर पहले सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का जयशंकर ने वेलकम किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं और आज की बैठक में 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे उनका भाषण होगा और आज की मीटिंग में जो तय होगा उन समझौतों पर दोपहर 12:30 बजे तक दस्तखत भी होंगे। SCO की बैठक में अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। 28 अप्रैल को रक्षा मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में हुई थी। अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब की थी और आज विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने वाली है जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। जुलाई में SCO के हेड ऑफ स्टेटस की बैठक भी होनी थी जिनमें आज फाइनल हुए समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आज की मीटिंग से पहले भारत के विदेश मंत्री ने कल रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ भारत का 1-to-1 का कोई इरादा नहीं है और इसीलिए इस बात को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जयशंकर की मुलाकात अलग से होगी। इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं SCO के विदेश मंत्रियों की इस मीटिंग में भी कई खास बातें हैं। बिलावल का भाषण सुबह 11 बजे होना है। SCO की मीटिंग के दौरान बिलावल भुट्टो कश्मीर मसले पर भी बोल सकते हैं और इसी के लिए निगाहें टिकी हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत दौरे आया है और कहा यह जा रहा है कि कल डिनर के वक्त बिलावल सबसे लास्ट में पहुंचे थे। डिनर के दौरान जयशंकर और बिलावल की मुलाकात भी हुई, दोनों ने हाथ भी मिलाया, लेकिन 1-to-1 बातचीत का फिलहाल कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अब बिलावल से पहले हिना रब्बानी 2011 में भारत दौरे पर आई थी, यानी कि 12 साल बाद 2023 में बिलावल भुट्टो SCO की मीटिंग के लिए इंडिया के दौरे पर हैं, लेकिन भारत उनके साथ 1-to-1 मीटिंग नहीं कर रहा है। भारत आने से पहले बिलावल की जुबान इंडिया के लिए कई बार जहरीले बोल भी उगल चुकी है। पिछले साल 15 दिसंबर को उन्होंने PM मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे थे। 18 दिसंबर को बिलावल ने यह झूठा आरोप भी लगा दिया था कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। पिछले साल मई में बिलावल ने कश्मीरी लोगों के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। इससे पहले 2014 में वो कश्मीर का एक इंच वापस लेने की बात भी कह चुके हैं। अब हम आपको सुनाएंगे कि भारत पहुंचने के बाद बिलावल ने क्या कहा और इसी बीच जयशंकर कुछ कह रहे हैं। SCO chair, we have initiated an unprecedented engagement with SCO observers and dialogue partners by inviting them to participate in more than 14 socio-cultural events. Dear colleagues, as a result of the COVID-19 pandemic and geopolitical upheavals, the world is today facing a multitude of challenges. These events have disrupted global supply chains, leading to serious impact on the supply of energy, food and fertilizers, and cascading effects on developing nations. These crises have also exposed a credibility and trust deficit in the ability of global institutions to manage challenges in a timely and efficient manner. These challenges, however, are also an opportunity for member states of the SCO to collaborate and address them collectively. With more than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO.
The unfolding situation in Afghanistan remains at the center of our attention. Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people. Our immediate priorities include providing humanitarian assistance, ensuring a truly inclusive and representative government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children, and minorities. India has always stood for multilateral approaches to addressing global challenges and has always been a willing partner in sharing our expertise and experience. In this regard, India's own achievement in the field of startups and innovation is a remarkable journey. Today, there are more than 70,000 startups in India, of which more than 100 are unicorns. We stand ready to share our experience with member states. Colleagues, in this context, I would like to express my gratitude to all of you for supporting India's proposal of creation of 2 new working groups on startups and innovation and on traditional medicines last year. I'm happy to note that the regulations to operationalize these working groups have been approved by member states. Excellencies, SCO is in its 3rd decade of existence, and this is an opportune time for its reform and modernization to keep the organization relevant in a rapidly transforming world. I'm pleased to note that the discussions on the issues of reform and modernization of the organization have already commenced. I assure you that India will extend its constructive and active support for this process. I also seek the support of member states for the long-standing demand of India to make English as the 3rd official language of the organization. This will enable a deeper engagement with English-speaking member states of the SCO and will take the work of this organization to a wider global audience. I'm happy to note that the progress on ongoing process for the admission of Iran and Belarus as full members of the SCO. I thank the Secretariat for their efforts in that direction. Similarly, I'm delighted that 4 new dialogue partners will sign the MOU for their association with SCO today in Goa. We welcome our new dialogue partners and hope to intensify engagement with them in the SCO format. Excellencies, India has proposed a New Delhi declaration as an SCO Summit declaration and 4 other thematic joint statements on cooperation in de-radicalization strategies, promotion of millets, sustainable lifestyles to address climate change, and digital transformation. I seek your support in timely finalization of these documents for approval by our leaders at the SCO Summit. I'm confident that today's meeting would lead to fruitful discussions which would help in sustaining the momentum of our cooperation. I once again wholeheartedly thank you all for your support for the first ever SCO presidency of India, and I sincerely hope that we can get together to make the SCO Heads of State Summit meeting a great success. Thank you. With that, may I now request our friends from the media to please leave the meeting hall so that the proceedings can thereafter continue. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया और इशारों में पाकिस्तान को बिना नाम लिए कैसे कटघरे में खड़ा किया, वो अभी आपने सुना। आतंक पर हर हाल में रोक लगना चाहिए। जब कोविड का संकट विश्व में था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तब भी चल रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक से पहले ये बातें साफ कर दी हैं कि अगर आतंकवाद को समाप्त करना है तो सबको एक साथ मिलकर आतंकवाद को हराना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को अभी भी हराया नहीं जा सका है, आतंकवाद का खतरा अभी भी नहीं टला है और इसीलिए आतंकवाद से लड़ाई हमारी प्राथमिकता है। आतंक की फंडिंग पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया है। भारत इस बार एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।